अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे बच्चों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बलन। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदी। मेरे बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 8, 9, 10 डिस्कस करेंगे। देखते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक की बात की थी। अब बच्चे, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जिसके बारे में पहले ही आपसे बात कर चुके हैं। हमने क्या करना है, पहले a प्लस बी फाइंड करना है, देन रिजल्ट को c में ऐड करना है, या पहले b प्लस c फाइंड करेंगे और रिजल्ट को a में ऐड करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखी हुई है यहाँ। सो आइए ज़रा इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। और क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 8। तो हमें ये प्रूव करना है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। सोल्यूशन हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे जी? लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या है? a प्लस बी प्लस सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पैरेंथेसिस डालनी है, a की वैल्यू डाल देनी है 1 2 3 1 -1 0। फिर उसके बाद b की वैल्यू है 1 -1 1 2 -2 2। सो b ने प्लस डाला 1 -1 1 2 3 1 3। ब्रैकेट क्लोज की, पैरेंथेसिस क्लोज की। एट द लास्ट वी विल राइट द वैल्यू ऑफ c, एंड द वैल्यू ऑफ c इज -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। अब क्या होगा जी? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन पहले दो मैट्रिसेस को ऐड करेंगे। सो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 प्लस -1 3 प्लस 1 2 प्लस 2 3 प्लस -2 1 प्लस 2
1 plus 3 minus 1 plus minus 1 plus you are saying that this is 0, so now we will say that 0 plus 3. Now the bracket is closed. Plus minus 1 0 0 0 minus 2 3 1 1 2. ओके, सो ना अब इनको ओपन करेंगे ब्रैकेट्स को. सो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 plus 1 2 minus 1 3 plus 1 2 plus 2 2 minus 2 है ना. साइन जब ब्रैकेट्स ओपन होंगी तो साइन नहीं चेंज होंगे क्योंकि साइन प्लस का. सो 3 minus 2 3 minus 2 1 plus 2 1 plus 3 1 plus minus 1 plus 1 0 plus 3 plus minus 1 0 0 0 minus 2 1 1 2. So now A plus B plus C. 1 plus 1 is 2, 2 minus 1 is 1, 3 plus 1 is 4, 2 plus 2 is 4, 3 minus 2 is 1, 1 plus 2 is 3, 1 plus 3 is 4, this is 0 and this is 3. Minus 1 0 0 0 minus 2 3 1 1 2. Now we will add these two matrices. So now A plus B plus C will be 2 plus minus 1 1 plus 0 4 plus 0 4 plus 0 1 plus minus 2 3 plus 3 4 plus 1 0 plus 1 3 plus 2. So now A plus B plus C will be, we will open the brackets. 2 minus 1 1 plus 0 4 plus 0 4 plus 0 1 minus 2. ऐसे ही साइन नहीं चेंज होंगे. 3 plus 3 4 plus 1 0 plus 1 3 plus 2. ओके, ब्रैकेट्स ओपन की, साइंस चेंज नहीं होंगे. Now 2 minus 1 is 1, 1 plus 0 is 1, 4 plus 0 is 4. So 1 1 4, A plus B plus C.
is equal to 1, 1 and 4. Now 4, 1 minus 2 बढ़ेगा, साइन आएगा तो रिजल्ट -1 हो जाएगा. ठीक है. 4 minus 1, 3 plus 3 is 6. 4 minus 1, 6. And 4 plus 1 is 5. 1 and 5. 5, 1, 5. This is the equation number 1 in the final form of left hand side. Now we will talk about the right hand side. Right hand side क्या थी जी? A plus B plus C, and now we will substitute the values. The value of A was 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 1. Two, 3, 1, 1 minus 1, 0, plus, and the parenthesis is opened. What is the value of B? 1 minus 1, 1, 2, 2, 3, 3. And now again the sign will be plus. No, what is the value of C? 0? Minus 1, 0, 0. Minus 1, 0, 0. Minus 1, 0, 0. 0 minus 2, 3. 1, 1, 2. And the bracket is closed and parenthesis is also closed. Now we will first of all solve these two matrices. So A plus B plus C is 1, 2, 3, 2, 3, 1, 1 minus 1, 0. Now addition का मेथड मैं आपको समझा चुका हूँ कि मैचिंग पोजीशन एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे. So 1 plus minus 1 minus 1 चाहिए, ठीक है, ये होगा -1 plus 0 1 plus 0 2 plus 0 minus 2 plus minus 2 2 plus 3 3 plus 1 1 plus 1 3 plus 2. 1 2 3 2 3 1 1 minus 1 0. And now 1 minus 1 minus 1 plus 0 1 plus 0 2 plus 0 minus 2 minus 2 2 plus 3 3 plus 1 1 plus 1 3 plus 2. No, this is 0, this is minus 1, this is 1. A plus B plus C
Now here we will have 1 2 3, ऐसे ही है 2 3 1, बोलिए क्या बोले आगे क्या आएगा? 1 तो नहीं है अभी, 1 minus 1 is 0, this is 0, this is minus 1 and this is 1, 0 minus 1 and 1, 0 minus 1 and 1, here 2 minus 4 and 5, and 5, 3 plus 1 is 4, 2 and 5, ऐसा ही है? A plus B plus C is 1 plus 0 2 plus 1 3 plus 3 plus 1 2 plus 2 3 plus 4 plus minus 4, 1 plus 5, 1 plus 4, minus 1 plus 2 0 plus 5, A plus B plus C is 1 plus 0, 2 minus 1, 3 plus 1, 2 plus 2, 3 minus 4, 1 plus 5, 1 plus 4 minus 1 plus 2, 0 plus 5. No, this is 1, 2 minus 1 is 1, 3 plus 1 is 4, 1, 1 and 4. One, 1 and 4. Now 2 plus 2 is 4, 3 minus 4 is minus 1, 1 plus 5 is 6, 4 minus 1, 6. minus 1 6 1 plus 4 is 5, 1 minus 1 plus 2 is 1, plus 2 है ना, और 5, 5, 1, 5. This is the equation number 2. 1 1 4, 1 1 4, 4 1 minus 1 6, 5 1 5, 5 1 5. So from equation number 1 and 2, A plus B plus C is same as A plus B plus C. Hence proved.